Hello. So let's begin with the third session for percentage. Since we have already taken two of the sessions for percentages, let me give you a quick recap of what all we have discussed as of now. Starting with the basics of percentage, where we discussed about the basic terminologies and all, and the conversion of fraction into percentage and vice versa. Going ahead, we talked about the formula related to percentage in the second session that we had. The first formula, that's percentage equals to desired upon base into 100. Going ahead, for the third session that we are having today, we will be going ahead with the second formula related to percentage. As I've told you, there'll be only two formulas when I'm talking in terms of percentage, and this is the second one that we'll be having. Based on this, we'll be getting the formulas for the upcoming chapters like profit loss, simple interest, and compound interest. The second formula for percentage is based on the concept of percentage increment and decrement. Percentage increment, decrement, it's a very basic topic. Let me just give you an example for that. Like suppose you are having 400 rupees with you and the value increased by 20%. So now the question is how much do you have now? A very basic question कि अगर आपके पास 400 rupees अभी अवेलेबल है और आपका वैल्यू जो है वो 20% से इंक्रीज हो जाता है, देन आपका न्यू वैल्यू कितना होगा? So obviously you must have got the answer by now. The correct answer is rupee 480. Right? Now let's get into the depth कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है. सबसे पहले देखते हैं. देखिए 400 आपके पास इनिशियली अवेलेबल था. Increase यानी प्लस, there is a 20% increment. So you'll calculate 20% of 400. आपने 20% of 400 कैलकुलेट किया. 400 ऑलरेडी अवेलेबल था और वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आपने क्या किया, 400 में जो 20% का वैल्यू है 80, ये ऐड कर दिया एंड आंसर टर्न्स आउट टू बी 480. इसी चीज को अगर मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूं, सो व्हाट आई हैव इज आई एम हैविंग एन इनिशियल वैल्यू व्हिच increases by x% to give me final value. So applying the concept, since I am having initial value, I wrote down initial value increment है यानी plus x% of initial value equal to final value. If I'll take IV common, I'll have 1 plus x upon 100 equal to FV. और LCM अगर मैं ले लूंगा तो I'll have IV into 100 plus x upon 100 equal to FV. So this is the final formula that we have obtained on the basis of generalization of the concept. ये मेरा ट्रांजेक्शन है IV प्लस जिसको x% से इंक्रीज करके फाइनल वैल्यू पहुंचना था, एंड द फॉर्मूला दैट आई एम ऑब्टेनिंग इज IV 100 प्लस x अपॉन 100. सो दो कंक्लूजन है. पहला कंक्लूजन है, देखिए एनी नंबर बाय डिफॉल्ट इन इटसेल्फ इज ऑलवेज 100%. सो जब ये नंबर डिफॉल्ट की बात की जाती है तो ये हमेशा 100% होता है. आपको बोला गया इसका 20% इंक्रीज कर दीजिए. 100 वो ऑलरेडी था, 20% इंक्रीज करना है. सो इफ आई माइट हैव कैलकुलेटेड 120% of 400, I would have got the same answer. It means that if I have to increase a value by 20%, I'll calculate 120% of the number. If I have to calculate 40% increment in a value, I'll calculate 140% of the number. Like suppose there is a 70% increment in a value, I'll calculate 170% of the number. Increasing a value, like suppose there is 120% increment in a value, I'll calculate 220% of the number. 100% वो already है, जितना इंक्रीमेंट है उतना ऐड करके you'll calculate, you'll get the answer. सेकेंड इंटरप्रिटेशन है, देखिए ये पूरा एक ट्रांजेक्शन है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम आईवी. तो सबसे पहले आपका ट्रांजेक्शन आईवी से स्टार्ट हो रहा है. फॉर दैट यू रोट डाउन आईवी. मेक इट अ रूल कि व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग दिस एरो इन बिटवीन विद एन इंक्रीमेंट, you'll add, मतलब it's a 100 plus x upon 100. Suppose there would have been a decrement, what I would have written is it's a 100 minus x upon 100 हो जाता. So whenever it's an increment, multiply by a bracket 100 plus x upon 100. इसी ये कंप्लीट करके मैं पहुंच गया हूं फाइनल वैल्यू पे. सो आई रोट डाउन इक्वल टू फाइनल वैल्यू. आई होप दैट्स क्लियर. ये क्लियर होगा. एक बार वापस से बता देता हूं जल्दी से पूरा. अगर आपका एक इनिशियल वैल्यू है जो x% से इंक्रीज होता है टू गिव फाइनल वैल्यू, द फॉर्मूला इज IV 100 plus x upon 100 equal to FV. गोइंग अहेड, इसी का एक और एग्जांपल एक बार लेके देख लेते हैं. ठीक है. So the next example is कि suppose you have 500 rupees and the value reduced by 30%. How much do you have now? So 500 था, 30% से reduce हो गया. अब कितना है वो calculate करना है. Again, answer is something that you might have calculated. वो बहुत easily आ जाएगा. But concept समझने की कोशिश करते हैं आ कैसे. So since 500 already है तो 500 लिख दिया. Reduce है मतलब there is a decrement.
I'll subtract 30% of 500. When I'll calculate 30% of 500, the value turns out to be 150. So 500 में से अगर मैं 150 subtract करूंगा, I'll get my answer, which is 350. So the correct answer is 350. Hopefully you must have got the correct value, but हो कैसे रहा है वो समझना जरूरी था. Again, what I'm doing is कि I'm generalizing this concept. मैं इसी concept को एक बार generalize कर देता हूँ. Let me take an example for this. कि एक पूरा transaction ले लेते हैं in general form. You have an initial value which reduces by y% to give you final value. Now, initial value है IV लिख दिया. Reduces यानी minus y% of initial value equal to final value. So the equation turns out to be IV minus y upon 100 into IV equal to FV. Again, taking IV common, I'll be left with 1 minus y upon 100 equal to FV. Taking LCM, I'll have 100 minus y upon 100 equal to FV. So basically, again, इस transaction से जब मैं इस formula पे पहुंच रहा हूँ, इसका दो interpretation है which we need to understand. The first interpretation is again the same. Whenever we are talking in terms of any number, by default, it is always 100%. अब ये जो 100% वाला वैल्यू था, ये 30% से रिड्यूस हो गया, तो 70% रह गया. If I might have calculated 70% of 500, I would have got the same answer, that is 350. This means that reducing a value by 30% is equivalent to calculating 70% of the number. If I have to reduce a value by 20%, I'll calculate exactly 80% of the number. If I have to reduce a value by 40%, I'll calculate 60% of the number. If I have to reduce a value by 80%, I'll calculate 20% of the number. Perfect. Right? तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, ये दोनों फॉर्मुलाज भी समझ में आ गए. इसका सेकंड इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं. Since I am starting the transaction with IV, I wrote down IV for the same. Again, finding an arrow in between, I'll multiply by a bracket. It's a decrement this time. I'll multiply 100 minus y upon 100. And I've reached final value, so equal to FV लिख दिया. So I hope that's clear. ये बहुत बेसिक सी चीज थी. इसी को एक्सटेंड करके आगे ले जाएंगे. ठीक है, बट आई होप यहां तक आपका क्लियर हो गया हो. गोइंग अहेड, इसका जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, दैट इज परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन सक्सेसिव मैनर. दैट इज सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. अब ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है फर्स्ट. अगेन, सो देखिए सक्सेसिव क्या होता है, इन सक्सेशन, एक के बाद एक. तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब होता है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो एक के बाद एक कंटिन्यूअसली होता रहे. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 100 rupees with you. The value increased by 20%. How much do you have now? It's 120. The value further increased by 10%. How much do you have now? 130. That's a wrong answer. Because ये जो आपका 10% का इंक्रीमेंट है वो 100 पे होगा या 120 पे होगा. 100 रुपीज था, पहले इंक्रीज हुआ 120 हो गया. अब मैं बोल रहा हूँ 10% इंक्रीज, इट शुड बी ऑन 120 और 10% के हिसाब से 12 का इंक्रीमेंट होगा. 132 शुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है? सो ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है व्हेन द चेंज टेक्स प्लेस ऑन द चेंज्ड वैल्यू. दैट इज सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. जब इनिशियल वैल्यू पे ही ऑपरेट करते रहते हो वो सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होता है. जब चेंज्ड वैल्यू पे चेंज कैलकुलेट करते हो तो वो सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है. लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. यू कैन पॉज द वीडियो फॉर 2 मिनट्स. मैं आपको दो क्वेश्चन बता रहा हूँ शीट में से. उन दोनों क्वेश्चन को आप एक बार कंपेयर कीजिए. विल गेट एन आइडिया कब सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लग रहा है और कब नहीं लग रहा है. शीट 2 ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, और शीट 3 ओपन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. You just pause the video here for 2 minutes. एक बार शीट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 और शीट 3 का क्वेश्चन नंबर 9 चेक कीजिए. Then we'll get an idea कि कौन सा सक्सेसिव है कौन सा नहीं है. So you can pause the video and go ahead. Okay, so I hope you must have checked it by now. आपने दोनों क्वेश्चन रीड कर लिए होंगे. Either you might have a clarity कि कौन सा सक्सेसिव है या नहीं है, और we need to discuss. तो ultimately एक बार अपन देख लेते हैं. When we are talking about question number 8 of sheet 2, the question says मनीलाल के पास टोटल कुछ मनी था.
उसमें से 65% मशीनरी में चला गया और 20% रॉ मटेरियल में चला। द थिंग टू बी ऑब्जर्व्ड इज, ये जो 65% यूज किया आपने, ये टोटल मनी का था, इनिशियल वैल्यू का था। और जो 20% यूज किया, ये भी टोटल मनी यानी इनिशियल वैल्यू का था। मतलब both the times you were operating on the initial value itself. It's not a case of successive increment decrement. क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ शीट 3 पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि आपके पास जो टोटल मनी है उसमें से 12.5% आपका टैक्स में चला गया और रिमेनिंग का 70% आपने खर्च कर दिया। 12.5% किसका? टोटल मनी का। 70% किसका? रिमेनिंग मनी का। ये टोटल पे कैलकुलेट नहीं करना है, 70% ऑफ द बैलेंस। मतलब इट्स अ केस ऑफ सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट when the change is taking place on the changed value rather than the initial value. So I hope that's clear. ये आप लोगों को क्लियर होगा कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कब होता है, कब नहीं होता है। अब होता कैसे वो देखते हैं। सो फॉर दैट आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जांपल, लाइक आपके पास एक इनिशियल वैल्यू था जो x% से इंक्रीज हुआ, a मिल गया, y% से रिड्यूस हुआ, b मिल गया, और फाइनली z% से इंक्रीज हुआ तो फाइनल वैल्यू आ गया। अब अपने को देखना है कि सिंगल ट्रांजेक्शन में तो अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया, अगर ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन आ जाएंगे तो अपन क्या करेंगे। तो देखते हैं। देखिए, अब पूरे फॉर्मूले को, पूरा ट्रांजेक्शन एक साथ लेके चलो, इससे बढ़िया मैं इसको पार्ट्स में ब्रेक करता हूं, और मैंने इसको यहां से यहां तक का पार्ट में ब्रेक कर दिया। दैट्स इट। मेरे को केवल इतना ही ऑब्जर्व करना है। अगेन दिस इज समथिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू इन द इन द केस ऑफ परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आप स्टार्ट कर रहे हो आईवी से, you'll write down IV. For the first arrow in between, you'll multiply by 100 plus x upon 100. You've reached final value A, so you'll write down equal to A. ये फॉर्मूला आई होप सबको क्लियर होगा। अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट, अब आपको देखना है ए को इंक्लूड करके ए से लेकर बी तक का ट्रांजिशन। इसको सोचिए थोड़ा सा, होगा कैसे वो मैं बता देता हूं। आप स्टार्ट कर रहे हैं ए से, सो राइट डाउन ए, एरो, ब्रैकेट 100 माइनस y अपॉन 100, और पहुंच गए बी पे इक्वल टू बी। आई होप दैट्स क्लियर। ए का जो वैल्यू ऊपर से मिला था आपको, IV 100 प्लस एक्स अपॉन 100, इसको आप यहां पे पुट कर सकते हैं यहां पे। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगा वो आएगा IV 100 प्लस एक्स अपॉन 100, 100 माइनस y अपॉन 100 इक्वल टू बी। यहां तक हो गया है। आगे चलते, अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम बी गोइंग अप टू फाइनल वैल्यू। स्टार्ट कर रहा हूं बी से, सो आई राइट डाउन बी, ब्रैकेट के लिए एरो आएगा 100 प्लस z अपॉन 100 का, पहुंच गया हूं फाइनल वैल्यू पे इक्वल टू f। मैंने क्या किया, बी का ही जो वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल था मेरा, बी इक्वल टू दिस, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया। तो फाइनली मेरे पास जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो देख लेते हैं। वो होता है IV 100 प्लस एक्स अपॉन 100, 100 माइनस y अपॉन 100, 100 प्लस z अपॉन 100 इक्वल टू FV। अब इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है। दो इंटरप्रिटेशन है, समझना है। देखिए, पहली बात तो अगर आप फाइनल फॉर्मूले को ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, आपको कोई भी मेंशन ऑफ ए और बी नहीं है वहां पे। मतलब when I'm talking in terms of the final formula obtained, intermediate values do not play a role. It is just about the initial and the final value. केवल आप इनिशियल और फाइनल वैल्यू की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इंटरमीडिएट वैल्यूज का कोई रोल नहीं है। ठीक है। अब लिखा कैसे, सबसे पहले स्टार्ट किया आईवी से, आईवी लिख दिया। रास्ते में मिला पहला एरो, मल्टीप्लाई किया पहला ब्रैकेट। रास्ते में मिला दूसरा एरो, मल्टीप्लाई किया दूसरा ब्रैकेट। रास्ते में मिला तीसरा एरो, मल्टीप्लाई किया तीसरा ब्रैकेट। मैं पहुंच गया हूं फाइनल वैल्यू पे, तो इक्वल टू मैंने फाइनल वैल्यू दी। आई होप दैट्स क्लियर। जितने एरो मिलते रहेंगे, यू कीप ऑन मल्टीप्लाइंग बाय ब्रैकेट्स एवरी टाइम, यू विल रीच योर फाइनल वैल्यू इजीली। ठीक है। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल फॉर द सेम। जैसे लेट्स अज्यूम आपके पास 10,000 रुपीज थे। द वैल्यू इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड बाय 10%, 20%, 30%, and decreased by 40%. So what is the final value obtained? अभी अगर मेरे को ये निकालना है, what I'll do is, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं 10,000 से। I'll write down 10,000. 10% इंक्रीज है, इंटू 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100 कर दूं।
20% इंक्रीज है इंटू 120/100, 30% इंक्रीज इंटू 130/100, 40% decrease. This will be 100 minus 40, 60/100. I'll solve this, I'll get the answer. समझ में आया करना कैसे? So I hope this is clear to all. Before going ahead, I'll be giving you some examples over here only. ठीक है? So यहां तक समझ में आना जरूरी था. अगर ये समझ में आ गया, then we can move on with the examples. अच्छा, आपको क्या करना है? I'll be giving you the question. Have to try to solve it and get me the answer quickly. If A's income increases by 20% every year, find the net increment in his income after 3 years. ठीक है? You can pause your video here, can try to solve it and get me the answer. We'll just wait for 2 to 3 minutes. Accordingly, we'll get the answer and we'll go ahead with it. Okay, so I believe you must have solved it by now. आपने वीडियो पॉज किया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, आंसर आ गया होगा. The correct answer for this question is 72.8%. ठीक है? अब करना कैसे है वो देख लीजिए. देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, जब ना तो आपके पास इनिशियल वैल्यू गिवन होती है, ना आपके पास फाइनल वैल्यू गिवन होती है, तो ये आपकी इच्छा है. आप कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लीजिए. इसको इजी बनाने का तरीका बता देता हूं. इनिशियल वैल्यू को 100 ले लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा. द वैल्यू इंक्रीज बाय 20% एवरी ईयर फॉर 3 years. मतलब 100 रुपीज था, 3 बार इंक्रीमेंट हुआ 20 का. अब कितना हो गया? 100 था, सबसे पहले लिख लो. 20 का इंक्रीमेंट है, 120/100. फिर 20 का इंक्रीमेंट है, फिर 120/100. फिर 20 का इंक्रीमेंट है, फिर 120/100. 0 से 0 कैंसिल करता हूं. 12 का क्यूब होता है 1728/10, 172.8. ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया. दिस इज नॉट द आंसर. अभी चेक करना है. आपसे पूछा है नेट इंक्रीमेंट. आपका इनिशियली 100 रुपए था, अभी 172.8 है. देयर इज अ इंक्रीमेंट ऑफ 72.8 ऑन 100 into 100, which is 72.8%. That is the correct answer. I hope that's clear. Chalo. So I guess we can go ahead with it. The correct answer is 72.8% for this. Going ahead, it's the next question. Okay, it is based on the previous question only. In the previous question, find the salary of A after 2 years if his current salary is 13.5 lakhs. Now the question is, जहां पे आपको initial value दे रखा है और फाइनल वैल्यू पूछा आफ्टर 2 years. यू कैन सॉल्व इट इजीली. जल्दी से ट्राई कीजिए. आंसर इज नो बिग डील. आंसर आप लोगों का आ जाएगा. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गेट मी द आंसर. ओके, सो होपफुली यू मस्ट हैव गॉट द आंसर बाय नाउ. चेक कर लेते हैं करना कैसे. इनिशियली 13.5 lakhs था. 20% का इंक्रीमेंट है 2 बार इंटू 120/100 into 120/100. You'll solve this value. I guess you will get the correct answer. The correct answer should be 19.44 lakhs. So very basic question. ठीक है? You could easily have applied the concept of percentage increment decrement. Would have got the answer for this. I hope that's clear. Going ahead with the next one. ठीक है? Now there is a short trick which is generally being discussed in books. Trust me for this. Particularly for CAT point of view, the short tricks are not going to play a very important role, but still we should be aware of them so that we can use if and when required. So the short trick in this case is, in case of successive increment decrement, if a value is successively increased by A and B percent respectively, then मतलब अगर आपका सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का केस है जहां पे आपके दो इंक्रीमेंट लग रहे हैं, A परसेंट और B परसेंट का, देन ओवरऑल इंक्रीमेंट निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस AB अपॉन 100. ठीक है? अब इट्स अ जनरल फॉर्मूला जिससे आप बाकी सारे निकाल सकते हैं. कि सपोज करो A इंक्रीमेंट था और B डिक्रीमेंट था, तो आप क्या करेंगे? A की जगह A और B की जगह माइनस बी लिख देंगे. व्हाट इज A इंटू माइनस बी? माइनस बी. सो इट इज नेगेटिव AB अपॉन 100. अगर दोनों डिक्रीमेंट थे, it is going to be minus A minus B plus AB upon 100. और अगर A डिक्रीमेंट और B इंक्रीमेंट था, it would have been minus A plus B minus AB upon 100. So basically the concept is that कि
बेसिकली ये शॉर्ट ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली फाइंडिंग आउट द फॉर्मूला एंड गेटिंग द आंसर, ठीक है। बट स्टिल आई सजेस्ट यू कि एक बार मेथड को प्रेफर कीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इन अ लॉन्ग रन, पर्टिकुलरली फॉर MBA एंट्रेंस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, method is going to be more important. I hope this short trick is clear. We can go ahead with the next one. Let me have one last question for the session. Okay. If the price of sugar has increased by 20 and 40% in the last 2 years, and now the current price is this, find the price of sugar 2 years ago. So we have discussed the first question, जहाँ पे initial और final दोनों values नहीं दे रखा था. We have discussed the second question, जहाँ पे final value नहीं दे रखा था, initial दे रखा था. Now this is the third question, जहाँ पे final value दे रखा है, and you have to calculate the initial value in this case. So generally, what the students do is, anyone? Okay. What generally they do is, वो इसको 33.6 को 20 और 40% से reduce कर देते हैं. I am sorry to say, but this is a wrong method. इस केस में आप कभी भी रिवर्स नहीं जा सकते हैं. तो इन केस इफ आई एम आस्किंग यू 20 और 40% का इंक्रीमेंट है, तो आप रिवर्स जाके आंसर पे नहीं पहुंचेंगे. ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ 100 को 10% से इंक्रीज कीजिए, तो आप बोलते हैं 110. मैं बोलता हूँ 110 को 10% से रिड्यूस कर दीजिए, तो 100 पे पहुंच रहे हैं क्या? नहीं, बिकॉज 100 का 10% होता है 11 और आप पहुंचेंगे 99 पे. द टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल. So you cannot go with a reverse approach in this case. So you have to move forward only. आपको इनिशियल वैल्यू नहीं दे रखा है, एक्स ले लीजिए, 20% का इंक्रीमेंट, फिर 40% का इंक्रीमेंट, एंड नाउ इट इज 33.6. अपन अपने मेथड से चलेंगे, x इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 140 अपॉन 100 इक्वल टू 33.6. I'll solve, I'll get x equal to 20. मतलब the price of sugar 2 years ago was 20 per kg. Clear? So that's the correct answer. With this, we are done with the theory part of percentages. Quick recap. We started with the basics of percentage. We discussed about the basic words related to percentage. We discussed about conversion of fraction to percentage and vice versa. We talked about the first formula related to percentage. That is percentage equals to desired value upon base value into 100. Going ahead, we discussed about the second formula of percentage based on the concept of percentage increment decrement. So with this, we are done with the entire theory part of percentage. We have already shared the sheets with you. What all you need to do is, for the remaining questions of sheet of percentage, please complete them positively by the next session. We'll have a doubt discussion session and we'll go ahead with it accordingly. Thank you.